Welcome back, guys, to the current affairs analysis of 6th of January 2024. My name is Saurabh Tripathi, and we are here to debate, discuss, analyze all the important current affairs topics for UPSC CAC, and we are going to do it daily. So I hope all of you like the last video. And today I'm going on a very different format. Today I'm taking two topics broadly for analysis from mains point of view, and three to four topics around for prelims point of view. So this will be the format, I think, which will be more useful, more productive for the students. So let's just jump into our today's class, and please subscribe to the channel and share it with your friends. So the first topic that I'm taking today is about India as a science superpower. So basically, a question is being asked whether India is a science superpower. A lot of basically is being said about India कि इंडिया जो है वो साइंस सुपर पावर होगा. सुपर पावर के लिए जो एक imagination है इंडिया as a सुपर पावर, it exists since last many decades. However, we are not living up to its potential. That is a separate matter. लेकिन यहाँ पे हम कॉम्प्रहेंसिव नेशनल पावर की बात नहीं कर रहे. यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ साइंस के बारे में बात कर रहे हैं. साइंस, which is a very important variable in the growth and progression of the human civilization since 18th century. जब यूरोप के अंदर रेनासा होता है, रेनासा was a very important thing to have happened. It's a very important chapter, not just in European history but also the history of the mankind. So that is a very serious development which has taken place in Europe. जिसकी वजह से आप कह सकते हो कि आज जो 21st century की जो दुनिया है, it basically is being imagined or realized by the Europe per se. So all the technological breakthrough, be it electricity, be it railways, airways, whatever you can see around you, you can categorically assert that is coming from Europe, or the Europe pursuit of what we call as science. तो साइंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वेरिएबल रहा है इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटीज. यस, यू कैन ऑब्वियसली लिंक इट विद इकोनॉमिक ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी. तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी जब इंडिया 2047 तक एक डेवलप्ड कंट्री बनने की ख्वाब देख रहा है, दैट वी आर सिंपली ड्रीमिंग अबाउट इट, वी हैव द एम्बिशन, द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैज स्पोकन इट कैटेगरिकली. तो उस कंटेक्स्ट में भी साइंस के बारे में बात करना हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है इंडियन साइंस के लिए. एंड लास्ट ईयर वी हैव सीन मेनी पाथ ब्रेकिंग developments have taken place in Indian science. We have landed on the moon. Chandrayaan 3 was a great success. We have commissioned indigenous nuclear reactors, the pressurized heavy water reactors. उसके अलावा भी अगर आप देखो बायोटेक्नोलॉजी के केस में, अब एटॉमिक एनर्जी के बारे में बात कर लीजिए, स्पेस, डिफेंस, मेनी टाइप्स ऑफ मिसाइल्स गॉट टेस्टेड. वी आर सिंपली बिल्डिंग लॉट मेनी शिप्स. हर डोमेन में यू विल फाइंड दैट द इंडियन साइंस इज सिंपली moving at a staggering speed. Like in an economy, obviously, we are growing at more than 7% annual growth rate, which is a very good thing. उसके साथ ही साथ इंडियन साइंस भी अगर आप देखेंगे तो इसमें काफी ज्यादा ग्रोथ दिखाई दे रही है. दैट्स व्हाई वर्ल्ड वाइड देयर इज अ डिबेट अबाउट द फ्यूचर ऑफ इंडिया एंड इंडियन साइंस. So I'm taking that cue from there. So what are the basic breakthrough that we have seen in 2023? तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्पेस में चंद्रयान 3 ग्रेट सक्सेस. गगनयान के बारे में हम सबने सुन रखा है. गगनयान, द मैन्ड स्पेस मिशन. सो मेनी टेस्ट आर बीइंग कंडक्टेड लास्ट ईयर 2023 में, जो कि सक्सेसफुल रहे हैं. इसके अलावा यू कैन टॉक अबाउट वैक्सीन्स. यस, कोविड वैक्सीन्स, the AstraZeneca vaccines we have built with, obviously, with Serum Institute of India, with Oxford University. That was a great thing. We simply provided vaccines to more than 1 billion people. इसके अलावा अगर आप देखें, mRNA वैक्सीन भी इंडिया में लास्ट ईयर डेब्यू उसने किया है. बहुत ही स्पेसिफिक मिशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किए जो कि चल रहे हैं, रिलेटेड टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रिलेटेड टू क्वांटम एस्पेक्ट, दैट यू हैव अ नेशनल क्वांटम मिशन. इसके अलावा डीप सी एक्सप्लोरेशन के बारे में बात की जा रही है. लीगो ऑब्जर्वेटरी, इसमें भी काफी काम किया जा रहा है. सो फंडामेंटल फिजिक्स के जो एस्पेक्ट्स हैं, जैसे स्ट्रिंग थ्योरी है, उनके ऊपर भी काफी ज्यादा काम इंडिया के अंदर किया जा रहा है. ब्रेन मैपिंग के बारे में बात कर लीजिए. सो अक्रॉस यू सी देयर हैव बीन मेनी साइंटिफिक breakthroughs that we are looking into. And आज
today's, that is the 6th of January, Aditya L1 mission have arrived at a destinated point. This is a mission which has been launched to study the sun. So L1 जो Lagrange point 1 है space के अंदर, it has arrived at its destination. इसके अलावा in the last few weeks we have seen the ISRO, Indian Space Research Organization, have launched a mission to study black holes as well. So all in all, there is a huge debate, not just in India, around the world. You must have seen in BBC, you have seen in many New York Times, for example. They are debating whether India, in their minds, which is a poor country, how they can spend a lot of money in scientific pursuit, and obviously all the derision and all the questioning that they reserve for India, that is there pretty much. But apart from that, a serious debate is there, and that's why the examiner for the UPSC, they are looking into it as well, and they may ask a question about the Indian science in the paper, GS paper 3 obviously. तो इस चीज को भी लेके हमें, इस चीज के ऊपर हमें ध्यान देना है. Now, breakthroughs के बारे में बात हुई. What are the challenges that Indian science as a whole is facing? Obviously, there are many challenges that Indian science is facing. We want to be a developed country by 2047, no doubt about that. We are the world's biggest country population wise. फिर भी अगर आप देखो, so इंडिया में रिसर्चर्स का जो नंबर है, that is around 26 per 1 lakh. So 1 lakh population पे इंडिया में 26 रिसर्चर्स हैं. For the comparison, you can see China में around 169 है per lakh population, and United States is 445. That is simply non-acceptable. Apart from that, you talk about the rankings of the universities from India. तो इंडिया की कोई भी यूनिवर्सिटी टॉप 100 रैंकिंग्स में नहीं आती. डिफरेंट जो पब्लिकेशंस पब्लिश करते हैं अपनी, चाहे वो क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग हो, चाहे वो टाइम मैगजीन की रैंकिंग हो, यू विल सी टॉप 100 में नहीं आती. द फर्स्ट यूनिवर्सिटी विच कम्स इज अराउंड 149th पोजीशन, और जो चाइना की 7th सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है जो कि लिस्ट में है, बेसिकली उसके बाद इसका नंबर आता है. सो दैट इज द सिचुएशन एज यू कैन सी. India is also suffering from many developmental challenges. So more than 10% of Indian population is simply living in extreme poverty. That is unki jo daily they are surviving on the limit which has been set by the World Bank is around $2.15 per day. तो इस लिमिट के नीचे हैं 10% of Indian population. So that is also a very serious thing. All the euphoria around the success of the Indian science, the challenges obviously वो पीछे हट जाते हैं, पीछे छुप जाते हैं, जिनके ऊपर हमें फोकस करना जरूरी है, क्योंकि you have to get the marks. Otherwise also this is very important. So what are the challenges that we are facing for Indian science? The first challenge, first and foremost challenge is obviously is money. No doubt about that. Money, 2/3 अगर आप देखें जो R&D के लिए पैसा आता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, 2/3 of that is coming from government of India. 2/3 is coming from government of India, and that too the maximum of government grants is simply reserved for sectors like space, sectors like atomic energy, sectors like defense, जहाँ पे प्राइवेट कंपनी साथ कोलैबोरेशन काफी कम होता है. ये एक बहुत ही सीरियस चैलेंज है जो इंडिया के पास है. जस्ट लुक एट दिस डेटा. दिस डेटा हैज बीन पब्लिश्ड बाय NST-MIS, Department of Science and Technology, Government of India, last year. This is authentic data. So you can see R&D जो expenditure है, and R&D is a percentage of GDP. So R&D as a percentage of GDP, you can see is around 0.64%. That is unacceptable. In countries like Israel, it is around 4.3% of the GDP. Countries like South Korea, 3.5%, China, 2%, 2.5%, United States, 2%. India, 0.64% of our GDP is being spent on R&D. If you're not going to spend money on research and development, obviously you will not have intellectual property right. At best, what you will do, license manufacturing. तो जब इनोवेशन नहीं होगा, तो आपके पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स नहीं होंगे. Obviously, you will be dependent on foreign countries, foreign vendors to do that, and that is not a healthy sign. No multinational company, be it in China, be in South Korea, be in Japan, be it America, they are where they are at the top of the chain, basically not because they have took IPR from somewhere else. They have developed in-house capabilities for research and development, and that's how they have arrived where they are. तो ये एक बहुत ही सीरियस चैलेंज है. R&D के लिए जो पैसा खर्च हो रहा है इंडिया में साइंस के ऊपर, दैट इज वेरी वेरी
low. Annual growth rate at current prices also you can see, basically there is a divergence between GDP growth and R&D. So you can see the graph divergences, many places the divergence are pretty much there to see. And expenditure and GDP annual growth rate at constant prices. So this is current prices and this is constant prices. Basically, we are in one domain, we are looking into counting inflation as well. So here also you can see the divergence are pretty much visible. Here it is converging somehow. But आपको फिर भी divergence काफी ज़्यादा दिखाई देंगे. That is also a very serious challenge. Money is a very serious challenge for R&D in India. India cannot be a scientific superpower if we are not going to spend money on research and development, or you are specifically focusing only on few sectors like atomic energy, like defense, or like space. You have to move beyond that, and that is the most important thing. Private sector को साथ में लेके चलना पड़ेगा. Private sector will have to pitch in the way it is happening around the world. दूसरा जो पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज द हेल्थ ऑफ द इंस्टीट्यूशंस. India, we are very fond of STEM discipline, that is science, technology, engineering, mathematics. So around 4 lakh institutions of higher education अगर आप देखें, they are focused on higher education. Only 1% of them are focused on research. That is the scale that we are talking about. ये स्केल है. Institutions of higher learnings are there, but research इनमें नहीं होती. So we are sticking to the theoretical aspect only. We are not going into the practical thing. So simply the way it is right now in India, that we are very good at software. All of you are aware of. Software के केस में India is very huge. We basically export more software. Dollar अगर आप टर्म्स में उसको देखें, then the exports of the gasoline by Saudi Arabia. सऊदी अरेबिया साल में जितना गैसोलीन या पेट्रोल या डीजल एक्सपोर्ट करता है, उससे ज्यादा वैल्यू वर्थ हम सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करते हैं. दैट इज अ वेरी ग्रेट थिंग, बट हार्डवेयर जो है इंडिया में, दैट इज अ सीरियस इशू. सो बेसिकली द थियोरेटिकल एस्पेक्ट ऑफ द रिसर्च इज सिंपली नॉट ट्रांसलेटेड इनटू द मटेरियल एस्पेक्ट. दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट. Unnecessary duplication है. अभी जो institutions हैं, they don't talk to each other. There is no collaboration at all among the institutions, between institution and industry and government. So institutions, industry and government, they don't collaborate, they don't talk at the level they are supposed to. And among the institution themselves, they don't talk. So duplication होता है. कोई project अगर IIT मद्रास कर रहा है, वही project IIT कानपुर कर रहा है in a way. So the same set of resources are being spent, and they will obviously uh, are wasting in a way the precious resources. तीसरी चीज अगर हम बात करें तो टैलेंट है. टैलेंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. ऑब्वियसली इंडिया में स्टेम बहुत ज्यादा है, एज यू आर अवेयर ऑफ. तो 30% हमारे जो ग्रेजुएट्स हैं, टोटल आउट ऑफ टोटल ग्रेजुएट, 31% बिलोंग्स टू स्टेम कैटेगरी, विच इज मोर देन यूनाइटेड स्टेट. यूनाइटेड स्टेट्स में ओनली 20% ग्रेजुएट्स बिलोंग टू स्टेम कैटेगरी. लेकिन ये जो 31% है, इनके साथ सीरियस इशू है. एकेडेमिया की अगर हम बात करें तो जो करिकुलम है आउटडेटेड है, इंफ्रास्ट्रक्चर मिसिंग है कॉलेजेस के अंदर, फंडिंग नहीं है रिसर्च के लिए, पीर रिव्यूड जर्नल्स पब्लिश नहीं होते, पेटेंट का जो सिचुएशन है दैट इज वेरी बैड. सो ऑल इन ऑल व्हाट हैपेंस दैट द टॉप लेवल जो टायर टैलेंट है वो माइग्रेट कर जाता है इंडिया से. अब अगर आप देखें एआई के केस में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो टोटल टॉप लेवल जो रिसर्चर्स हैं उनमें 8%, 8% अराउंड ये इंडिया से आते हैं, लेकिन नन ऑफ देम वर्क इन इंडिया. दिस इज द folly. This is the folly that we are facing. The researchers, Indian researchers are there, but they're not working inside India, they're working in America and Europe and whatnot, other countries. So that is a very serious problem. Brain drain यहाँ पे pretty much is visible, and that is a very serious issue. The last, obviously, among the challenges you'll talk about, you can think of bureaucracy, the hard-handedness of the government of India. So these kind of things are there. The red tapeism is pretty much a part and parcel of the bureaucracy. तो वहाँ पे ये जो aspect है वो भी problematic काफी ज़्यादा है. The scientific community is facing a lot of hardship because of that. तो challenges की category में अगर आप देखें तो इनके बारे में हम बातें कर सकते हैं. अब ये जो challenges हैं, they are there, and because of that India as a science superpower, there is a question mark on that. अगर आप देखें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में, जो इनोवेशन इंडेक्स है, which I will obviously show you. This is the latest index which we have. तो इसमें जो रैंक है इंडिया की वो 40 है.
So across these broader parameter, macro parameter, institution, human capital research, infra, market sophistication, creative output, knowledge technology output, and business sophistication, they are there. ये जो 40 रैंक है हमारे जो कैटेगरी है लो इनकम इकोनॉमी जो कैटेगरी है उसमें हम टॉप में आते हैं, लेकिन इफ यू वांट टू गो बियॉन्ड दैट ऑब्वियसली टू मिडिल इनकम इकोनॉमी, अपर मिडिल इनकम इकोनॉमी, ऑब्वियसली द वे द चाइनीज आर, या आगे आपको जाना है तो ऑब्वियसली यू विल हैव टू अप योर गेम। आपको ज़्यादा फोकस करना होगा अक्रॉस द पैरामीटर, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो जिसमें हम 84 नंबर पे हैं, दिस इज नॉट ए गुड थिंग टू नोट, या इंस्टीट्यूशंस हैं, या फिर बिजनेस सोफिस्टिकेशन है 57, यू हैव टू इम्प्रूव द रैंकिंग लाइक दिस, जस्ट फोकस ऑन दैट। फीमेल्स एम्प्लॉयड विद एडवांस डिग्री, यहाँ पे हमारा नंबर 106 है, तो दैट इज अ सोसाइटल एक्सपेक्ट दैट वी हैव, विच इज नॉट ए गुड थिंग। So just look into the micro parameters which are written under macro parameters and you will understand exactly कहाँ पे issues आ रहे हैं ranking के basis पे. So these are the challenges that we have when it comes to science, Indian science, and we have to overcome these challenges. Obviously, the government of India के बहुत सारे initiatives हैं, इसीलिए steps जो take लिए गए हैं to promote science technology innovation in India. 1971 में Department of Science Technology establish किया गया, रिसर्च फंडिंग स्कीम्स हैं साइंस एंड इंजीनियरिंग बोर्ड की, अदर इन हाउस प्रोग्राम्स हैं, डीएसटी एज एन ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन सेट किए गए, 2000 में नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन लाया गया, 2003 में इनोवेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी लाई गई, 2013 में साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन पॉलिसी, एंड 16 में अटल इनोवेशन मिशन लॉन्च किया गया है, अटल टिंकरिंग लैब्स एंड ऑल, दे आर वेरी इम्प्रेसिव policies, and they are simply bearing fruits as well. And the most important development which has taken place last year 2023, when National Research Foundation NRF has been brought into the picture by simply demolishing the SERB साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड, इसको हटा के नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, जैसा कि अमेरिका में एक रिसर्च फाउंडेशन नेशनल लेवल पे, उसको रिप्लिकेट करते हुए इंडिया में इसको क्रिएट किया गया, विच विल बी हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, एंड इट विल work across domains, humanities, art, science, technology. It will be simply the pioneer in simply allocation of the funding. ये जो डुप्लीकेशन वाली बात हमने की थी चैलेंजेस में यूनिवर्सिटीज के बीच में, इंस्टीट्यूशन के बीच में, उसको देखेगा, कोलोब्रेशन बढ़ाएगा. Only 20% of the money which will be coming around, हम बात कर रहे हैं अराउंड 5 बिलियन यूएसडी की, जो कि अगले 5 से 7 साल के अंदर खर्च किए जाएंगे आर एंड डी के ऊपर इंडिया में, जिसमें से सिर्फ 28%, 28% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड करेगी. रेस्ट ऑफ द मनी विल बी कमिंग फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर. इंस्टीट्यूशंस ऑफ प्राइवेट सेक्टर के लिए बीच में इंटीग्रेशन की बात यहाँ पे की जा रही है, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. So this is a very important development that has taken place when it comes to science and technology in India. हम टैलेंट को वापस लाना चाह रहे हैं. So after COVID, Government of India have launched many schemes to bring back the talent, the scientific community, the Indian scientific community which is there outside country, outside India. तो वहाँ पे उनके ऊपर फोकस किया जा रहा है कि भाई उनको अच्छे पर्क्स दिए जा रहे हैं, अट्रैक्टिव पैकेजेस दिए जा रहे हैं कि आप आइए इंडिया में काम करना स्टार्ट कीजिए. सो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट विच इज देयर. प्लस जो गवर्नमेंट कंट्रोल्ड एंटिटीज हैं, जैसे डीआरडीओ है डिफेंस के केस में, इसरो है स्पेस के केस में, एटॉमिक एनर्जी है, यहाँ पे वी आर सिंपली मेकिंग अ लॉट ऑफ ब्रेक थ्रू, एंड दैट इज अ वेरी गुड थिंग. वी विल क्लाइंब द लैडर वेरी फास्ट हियर. लेकिन जो अदर एस्पेक्ट हैं, चाहे बायोटेक्नोलॉजी हो, जैसे लास्ट ईयर बायो इकोनॉमी एक रिपोर्ट पब्लिश की है, जो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है इंडिया के अंदर, उसने रिपोर्ट पब्लिश की है, बायो इकोनॉमी रिपोर्ट. उसके बारे में हम बात करें अगर, या फिर और भी जो साइंटिफिक डिस्कवरीज हैं, साइंटिफिक वर्क है, जो कि ट्रांसलेट जिसको करना ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स के लिए के अंदर, वो एक काफी बड़ा चैलेंज है. तो इसको लेके काफी ज्यादा काम किया जा रहा है, एंड लेट्स होप in the next 5 to 7 years the India as a science superpower, this dream will be achieved. Dr. Kalam, when he have wrote that book in 2020, India in 2020, this is the name of the book, Dr. APJ Abdul Kalam, the former president of India, he has emphasized a developed country by 2020, and he has said that you have to focus on 3 key aspects if you want to make India a developed country or a superpower. You have to empower
the individuals, you will have to empower the institutions, you will have to liberalize the institutions, the processes, and give more autonomy to the people. You'll have to start trusting your own people. This is the most important thing when it comes to this idea of India as a science superpower. So the future is bright provided this endeavor in the form of NRF is successful. So NRF बहुत ही important constituent बनेगा आपके आंसर राइटिंग है जब आप साइंस सुपर पावर के बारे में बात करेंगे. The next topic is antimicrobial resistance. There is a editorial today in the Hindu about this issue. So first multicentric point prevalence survey of antibiotic use at 20 net sites conducted by the NCDC under the Health Ministry have thrown off startling statistics. So this is a very important development which has taken place. India के अंदर हम बात कर रहे हैं antimicrobial resistance की. Just to keep in perspective, first I'll talk about the AMR, what are the reasons, what are the rationale, and what are the threats. Then I'll talk about this study which has been conducted under the aegis of NCDC. This is National Disease Control Institution. National Center for Disease Control NCDC under Ministry of Health. तो AMR है क्या? Antimicrobial resistance. What are the microbes? Microbes we are talking about specifically the viruses, the bacteria, the fungus, the parasite. These are microbes. They are helpful to human being and they are very deadly to human being as well. Certain set of microbes are very useful for us, like our gut bacteria, which helps in digestion of the food, and certain types of microbes are not good for human health and well-being, like for example malaria. So microbes के साथ जो relation है वो बहुत ही interesting relation है humans का, and they are one of the largest killers of human beings as well. Since the dawn of the 18th century, जब science आगे बढ़ता है, natural sciences progress करती हैं, so more scientific outlook simply led to a situation where the researchers, the doctors, then doctors and researchers simply started looking into the material rationale for the diseases, जिसकी वजह से आप देखते हो कि पेनिसिलिन जैसी एंटीमाइक्रोबियल जो medicines थे, they started coming to the picture. And last century also, around 1980 to year 2010, was also a golden period when it comes to introduction of variety of antimicrobial drugs. लेकिन अब इशू ये है कि जो पाइपलाइन है ये ड्राई होती जा रही है. नो न्यू antimicrobial drugs at scale the way we have witnessed in these 30 years are getting released into the market. और जो पुरानी drugs हैं antimicrobial, they are becoming less and less effective against these microbes like bacteria, viruses, fungus, and parasites. It is a natural process of evolution. So these things like bacteria, like viruses, these microbes, they also evolve. You are killing them with these drugs. They are developing their own defense mechanism. लेकिन यहाँ पे issue ये है कि because of human misconduct, because of human activities which are obviously inappropriate, उनकी वजह से antimicrobial resistance काफी तेजी से बढ़ रहा है. Now this can assume the form of a pandemic as well. There are many reports around this topic in the world media, Indian media. You will find कि वो बात कर रहे हैं कि कैसे एक पैंडेमिक के तौर पे उभर के आ सकता है. So this is a very interesting and serious issue. Bill Gates have talked about a pandemic. There is a lecture that he has given, TED Talk, I think 2017. Year 2017 is the year जहाँ पे उन्होंने TED Talk दी थी. इसके बारे में बात किया गया था. उन्होंने कहा था कि there is a possibility of a microbe, a bacteria particularly emerging, and it can bring a pandemic, which it did in 2020. He also talked about antimicrobial resistance as the single biggest challenge in this field particularly, which can emerge as a form of a pandemic. ये एक बहुत ही serious issue है. अब because of antimicrobial resistance, a lot of drugs are simply becoming less and less effective, और जिसकी वजह से the casualties of basically they are increasing. So it is a very serious issue. अगर इसको हम देखें exactly what are the scale and regions by spread, scale की अगर हम बात करें तो WHO की रिपोर्ट है 2019 में they are saying 1.27 million people died in 2019 because of antimicrobial resistance.
and they are estimating by 2050 the amount of resources which will be spent to combat this will be around 100 trillion dollars. It is going to have a serious and severe effect on the GDP of the world economy precisely. So काफी बड़ी मात्रा में इसका impact होगा. रीजंस क्या है इसके स्प्रेड होने के? मिस यूज है, ओवर यूज है, ऑब्वियसली लैक ऑफ एक्सेस क्लीन वाटर सैनिटेशन वॉश फैसिलिटीज, पुअर इन्फेक्शन डिसीज प्रिवेंशन इन हेल्थ केयर फैसिलिटीज, क्वालिटी अफोर्डेबल मेडिसिन वैक्सीन डायग्नोस्टिक नहीं मिलता पेशेंट्स को, अवेयरनेस नहीं है, लैक ऑफ नॉलेज, इन्फोर्समेंट ऑफ लेजिस्लेशन भी है. सो इफ आई जस्ट समराइज ऑल ऑफ इट एंड व्हाट वी आर लुकिंग इनटू, वी आर लुकिंग इनटू इनअप्रोप्रिएट use of the antibiotics when it is not required, sometimes when the duration of the consumption is simply not adhered to, or without prescription people simply take these medicines, particularly in India. The pharma companies, they have simply encashed the market, और वो डॉक्टर्स को जो गिफ्ट देते हैं, this is also a serious breach of medical ethics. So जो नेशनल कमीशन मेडिकल कमीशन है, एनएमसी, इनकी जो गाइडलाइंस हैं सीवियरली वायलेट होती हैं, और जो सेल्फ इम्पोज्ड ऑब्वियसली एथिक्स होते हैं प्रोफेशन के, मेडिसिन प्रोफेशन particularly the physicians, they also simply, there is a clear cut violation here. So they also prescribe these drugs because they get, as I said, gifts, so called gifts from the pharma companies. ये भी एक बहुत सीरियस इशू है. प्लस जो हाई एंड फैसिलिटीज हैं, जो टर्शरी हेल्थ केयर फैसिलिटीज हैं, वहां पे गवर्नमेंट कंट्रोल प्राइमरली, वहां पे आपको सैनिटेशन हाइजीन की जो सिचुएशन है, दैट इज नॉट दैट गुड. दैट इज ऑल्सो ए वेरी सीरियस इशू when it comes to AMR. So a serious crisis is developing. अगर आप इंडिया की बात करें 2019 में, सो द नंबर ऑफ डेथ्स अगर आप देखें 2019 के अंदर, उसमें टॉप 5 रीजंस की तरफ हम जाएं, टॉप 10 को ना भी देखें, यू विल फाइंड द फर्स्ट फॉरमोस्ट इज कार्डियोवास्कुलर, क्रोनिक रेस्पिरेटरी, एंड थर्ड वन पे एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस आपको दिखाई देगा. तो ये जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज हैं, NCD, जो टॉप 4 जिसमें हम कहते हैं, टॉप 4 में क्या क्या आती हैं? सबसे पहले कार्डियोवास्कुलर डिसीजेज आती है, रेस्पिरेटरी डिसीजेज आती हैं, कैंसर आता है इसमें. Apart from that, diabetes is a very serious issue. Plus these days we are talking about one more disease, that is mental health. तो टॉप 5 डिसीजेज में NCDs जो हैं, इनमें अब आपको एक सीरियस वेरिएबल इमर्ज होता दिखाई दे रहा है, जिसे हम कह रहे हैं एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस. So this is a very serious crisis that we are facing. Plus animal husbandry is also very important here. Chickens, all sort of dairy जो फैसिलिटीज होती हैं, वहां पे एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स दी जाती हैं इन एनिमल्स को, ताकि उनकी ग्रोथ फास्टर हो, उनको डिसीजेस ना हो, एंड देन इट सर्कुलेट इनसाइड द फूड चेन इन अ वे व्हिच इज आल्सो कॉजिंग अ लॉट ऑफ स्ट्रेन व्हेन इट कम्स टू दिस इशू. तो बहुत सारे मेजर्स लिए गए हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, इन इंडिया आल्सो, टू काउंटर दिस थिंग, काउंटर दिस इशू ऑफ एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो WHO की गाइडलाइंस हैं, उनमें बात की जा रही है कि भाई आपको फोकस करना है किसके ऊपर? वन हेल्थ अप्रोच के ऊपर फोकस करना है. व्हाट इज वन हेल्थ? वन हेल्थ मींस आफ्टर कोविड दिस आइडिया इज गेनिंग मोमेंटम, एंड दैट इज कि ह्यूमन हेल्थ इज नॉट सेपरेट फ्रॉम एनिमल हेल्थ एंड द हेल्थ ऑफ द एनवायरनमेंट. You have to see human health in association with animal health and the health of the environment, which is a very good aspect. इसके ऊपर फोकस करना है. इसके अलावा they are talking about global action plan on AMR. इसमें बात की जा रही है टॉप जो 4 इंस्टीट्यूशंस हैं, डाइवर्स फील्ड में काम करते हैं, जैसे यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम है, जैसे फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, या फिर OIE है जो कि एनिमल हेल्थ के डोमेन में काम करता है, या फिर WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. ये चारों इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन कोलैबोरेट कर रहे हैं, इसलिए इसको हम क्वाड्रिपार्टेट जॉइंट सेक्रेटेरिएट भी इनका बनाया गया है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है. दिस इज आल्सो ए टाइप ऑफ क्वाड दैट यू आर लुकिंग. 2022 में UN की एक मीटिंग में डिसाइड किया गया कि 2024 में 2024 देयर विल बी ए हाई लेवल मीट रिलेटेड टू AMR. 2015 World Health Assembly have simply talked about World AMR Awareness Week and a very important program, that is GLASS. GLASS is a surveillance framework obviously about AMR. इंडिया के अंदर अगर हम बात करें, जो एफर्ट्स लिए गए हैं नेशनल हेल्थ पॉलिसी में 2017 में इसके बारे में बात की गई है, दैट इज ऑब्वियसली ए गिवन थिंग. अपार्ट फ्रॉम दैट, जो 12th फाइनेंशियल ईयर प्लान था 2012 से 17 के बीच में,
इसमें नेशनल एक्शन प्लान ऑन AMR was launched. So national action plan on AMR was launched. इसमें बात की गई थी कि the government of India, Ministry of Health will focus a lot on the surveillance of the antimicrobial resistance. अभी सर्वेलेंस के तहत ये जो NCDC है, नेशनल सेंटर फॉर डिसीज प्रिवेंशन कंट्रोल, इन्होंने ये 20 नैक्सेट साइट्स हैं, ये बेसिकली टर्शरी हेल्थ केयर साइट्स हैं, जहां पे एक सर्वे कंडक्ट किया है, ये सर्वेलेंस के लिए किया गया है कि व्हाट इज द स्टेटस ऑफ द एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस इन इंडिया। दीज आर द फैसिलिटीज। 2021 से 22 के बीच सर्वे किया गया। अब ये फैसिलिटीज 20 फैसिलिटीज हैं, आप देख रहे हैं मेडिकल कॉलेजेस हैं बहुत सारे, ये सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स भी हैं, और इनमें आपको टॉप लेयर जो टर्शरी हेल्थ केयर है उसके अंदर जो फैसिलिटीज हैं वो भी आपको दिखाई दे रही हैं। So here they have conducted a large survey and they have found that more than 70% of the patients admitted basically have been given antibiotics medicine. And the funny part, only 6% of these patients, there was a blood test or some other test which was conducted, and then a specific antibiotic drug was prescribed to them. More than 50% of the people who were given these drugs, इनमें से majority जो है इनको drugs as a precautionary measure के तौर पे दी गई। अब these kind of inappropriate analysis, diagnosis, prognosis by the medical fraternity is causing a lot of damage to Indian fight against AMR. ये सर्वे इसके ऊपर बात कर रहा है। So you will quote the data of this survey in your answer when you will talk about the AMR. You will specifically mention the NCDC, and then you will write how in the premier facilities across the country, super specialty hospital, government run hospitals, this is simply a given thing that antibiotic drugs are prescribed even though when they are not needed. अब इससे होगा क्या? इससे जो कैंसर के ट्रीटमेंट होते हैं, जो सी सेक्शन होता है प्रेग्नेंट वुमन का, या और भी डिफरेंट टाइप की सर्जरीज हैं, यहाँ पे अगर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस डेवलप होता है तो सुपर बग्स basically they will emerge, and super bugs are going to create a lot of havoc. They're going to create a lot of havoc. So health की अगर हम बात करें तो mortality, morbidity, the stay in the hospital, everything will be impacted if antimicrobial resistance is allowed to develop, and it is going to develop if the inappropriate practices like what this survey revealed is going to continue. So हमारा जो प्लान है एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस के लिए, that is very important. All the important actors, be it the medical fraternity, be it the pharma companies, the individuals, civil society, media, everyone should generate awareness about the antimicrobial resistance. This is the very important thing to note. This is for GS paper 2. Now the prelims news. पृथ्वी विज्ञान स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च की है. Basically this is nothing new. There were multiple schemes which were there और जिनको amalgamate किया गया है under one roof. So Ministry of Earth Sciences, a very important ministry under government of India. Basically this looks into all sort of systems, चाहे वो हाइड्रोस्फीयर हो, क्रायोस्फीयर हो, एटमॉस्फेयर हो, इनके ऊपर ये देखता है, इनके ऊपर काम करता है. और जो फंडामेंटल एस्पेक्ट है अबाउट एक्सप्लोरेशन when it comes to living or non-living resources across the poles of Earth, Antarctica, Arctica, Himalayas. तो वेदर फोरकास्ट की अगर आप बात करें या वार्निंग फॉर नेचुरल डिजास्टर्स के बारे में बात करें, थंडर स्टॉर्म, फ्लड, हीट वेव्स, सो दिस मिनिस्ट्री इज लुकिंग इनटू ऑल ऑफ इट. अब इसी मिनिस्ट्री को ध्यान में रखते हुए जो स्कीम्स थी, there are primarily 5 ongoing sub schemes like across. Of these kind of abbreviation you will have to remember for prelims के लिए बहुत ही important है. Across, this is a scheme basically about remodeling, climate research modeling, basically atmosphere and climate research modeling, observation system and services. इसके अलावा हम बात कर रहे हैं PACER. What is this? PACER is about cryosphere research एक तरीके से, तो polar science and cryosphere research is PACER. इसके अलावा there was a scheme called SAGE. SAGE is seismology and geosciences research. And reach out,
Research, education, training, and outreach. This is a reach out scheme. And then there is a scheme called O Smart. This scheme is about ocean services, modeling application, research and technology. इनको कंबाइन करके ये स्कीम पृथ्वी विज्ञान स्कीम जो है लॉन्च की गई है फॉर द पीरियड बिटवीन 2021 टू 2026. ये जो 14 फाइनेंस कमीशन का पीरियड है, 15 फाइनेंस कमीशन का जो पीरियड है उसके लिए लागू की गई है एट द कॉस्ट ऑफ अराउंड 4800 crore rupees. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम. तो इसके ऊपर आपको ध्यान देना है. नाउ फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट्स ऑफ नेशनल इनकम हैव कम एंड जो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस है इसने फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट्स को रिलीज किया है. यू कैन सी आई हैव ब्रॉट द स्लाइड्स हियर. सो फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट जो कि लॉन्च किए गए हैं जीडीपी 2023-2024 के लिए एट 2011 प्राइसेस. दीज आर द कांस्टेंट प्राइसेस, दीज आर द करंट प्राइसेस. नाउ टू क्वार्टर वन एंड क्वार्टर टू ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2023-2024 इनका डेटा हमारे पास है. 7.6% एक क्वार्टर में, 7.8% एक क्वार्टर में इंडियन इकोनॉमी ने ग्रो किया है. सो ऑन द बेसिस ऑफ दीज टू क्वार्टर्स द नेशनल इनकम एंड एक्सपेंडिचर कंपोनेंट्स जो हैं एडवांस एस्टिमेट्स को रिलीज किया जाता है. दिस इज नथिंग न्यू, दिस हैपेंस एवरी ईयर. अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग जो एस्पेक्ट है वो आपको देखना है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से कि एग्जैक्टली जीडीपी कितनी है हमारी. तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जीडीपी एंड जीवीए फॉर एग्जांपल, ग्रॉस वैल्यू एडेड. इन सब के बीच का जो डिफरेंस है वो प्रीलिम्स में किसी न किसी तरीके से आपसे पूछा जा सकता है. यहाँ आप देख रहे हैं जो जीडीपी है दैट इज अराउंड 1,778,641 करोड़ रुपीस. अगर आप एक्सचेंज रेट को देखें तो $1 इज अराउंड 83 रुपीस. तो ऑल एंड ऑल अगर आप डिवाइड करें नंबर को जो 171,78,641 इसको 83 से डिवाइड करें तो यू आर गेटिंग एट अराउंड $2.06 ट्रिलियन. इंडियन इकोनॉमी कांस्टेंट प्राइसेस पे 2011-12 का जो बेसिक ईयर लिया जा रहा है उसके बेसिस पे इट इज अराउंड 2.06 ट्रिलियन. नाउ यू विल से सर व्हाट इज दिस. वी आर टॉकिंग अबाउट $3.73 ट्रिलियन इकोनॉमी. कुछ लोग तो कह रहे हैं इंडिया $4 ट्रिलियन इकोनॉमी है. बट दैट इज ऑन करंट प्राइसेस. करंट प्राइसेस क्या होते हैं और इन दोनों में डिफरेंस क्या है. करंट प्राइसेस जब होते हैं ये मार्केट प्राइसेस हैं, इनमें इन्फ्लेशन जो है पिछले 10 साल का वो इंक्लूडेड है. फॉर एग्जांपल देयर इज ए पेन व्हिच इज यू कैन परचेज एट अराउंड 30 रुपीस इन 2011. एक पेन है जो आपको बहुत फेवरेट है, 2011 में आप उसको 30 रुपए में खरीद सकते थे, बट आज 2023 में उसी का रेट जो है वो बढ़ के 70 रुपीज हो गया. लेकिन वो पेन का प्रोडक्शन एक क्वांटिटी ही प्रोड्यूस हुई. फॉर एग्जांपल there was a unique pen which was manufactured only for you. So quantity is at constant, the volume is constant, लेकिन price जो है बढ़ता जा रहा है क्योंकि inflation is also important. This is the difference. And these components are very important for you to note, not the number but the percentage. The Indian economy के जो verticals हैं जिनमें हम private consumption की बात करेंगे, government consumption की बात करेंगे, investment की बात करेंगे और trade की बात करेंगे. So that is also very important. The third topic is Indian Navy rescue of MV Leela Norfolk. This is basically a ship which has been hijacked. There was an attempt to hijack this ship in the West Arabic Ocean, और जिसके लिए इंडियन नेवी ने they have launched a specific mission to rescue this ship. There is a lot is happening across the West Asia region. There is a war ongoing between Israel and Hamas, and lot of regional powers like Lebanon, like Iran. They also are simply simmering with tension, with aggression. So a lot can happen there, and that's why this issue around Yemen, Bab Mandab, जो एक important strait है, वहाँ पे जो हूती rebels हैं, they are causing a lot of strain. And Somali pirates also. ये Somali pirates ने इस शिप को बेसिकली हाईजैक करने की कोशिश की. फ्यू डेज बैक वी हैव मस्ट हैव हर्ड ऑफ प्लूटो शैम, एक शिप थी जिसके ऊपर ड्रोन अटैक किया गया हूती रेबल्स के द्वारा. सो नाउ दिस मैप इज वेरी इंपॉर्टेंट. देयर आर 3 चोक पॉइंट्स फॉर द अरेबिक ओशन, जो कि मेडिटेरियन सी, जो कि ये आप देख रहे हो, दिस इज मेडिटेरियन सी, दिस इज मेडिटेरियन सी. तो 3 चोक पॉइंट हैं. दिस इज द सुएज कनाल इज अ चोक पॉइंट, Bab al Mandab Strait, this is a choke point, and then here this is the Hormuz, the Strait of Hormuz.
which is a choke point. So across these three choke points, the Indian Navy is very active simply because a lot of shipping takes place through these areas. And हमारी जो ट्रेड है वेस्ट एशिया के साथ काफी ज्यादा है, जो यूरोप के साथ इंडिया की ट्रेड है वो भी इसी रूट से होकर निकलती है. सो फॉर आर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, फॉर आर ट्रेड, दिस इज एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट दैट वी कीप ए लॉट ऑफ फोकस हियर. तो इंडियन नेवी का कंटिन्यूस प्रेजेंस यहाँ पे होता है. दिस मैप इज वेरी इंपॉर्टेंट, पे लॉट ऑफ अटेंशन टू इट, सी इट केयरफुली. देयर कैन बी ए क्वेश्चन. अब ये जो एरिया है अराउंड डिजबोटी और सोमालिया, दिस इज सोमालिया. सो बाबल मंदब, इसका ये अरबिक नेम है, इसका मतलब होता है गेटवे ऑफ टीयर्स. So indeed, it has been a gateway of tears for commercial shipping for many years because of the lawlessness around this area. And Djibouti, even though Djibouti में कई सारे countries के foreign bases, जैसे चाइना, उनका एक foreign base है यहाँ पे, अमेरिका, फ्रांस. So still there is a lot of problem here. तो sea lines of communication under threat, जिसको लेके the government of India is very concerned, and obviously we have to be concerned about it. So pay attention. The fourth topic is UN release of World Economic Situation Prospect Report. I'll talk about this report in detail in the main sections on Monday, preferably. बट अभी के लिए ये रिपोर्ट रिलीज हो गई है जो कि काफी ग्रिम पिक्चर प्रेजेंट कर रही है वर्ल्ड इकोनॉमी को लेके. दे आर टॉकिंग अबाउट द अनइवन रिकवरी इन लेबर मार्केट. दे आर टॉकिंग अबाउट द फ्लाइट ऑफ द कैपिटल फ्रॉम द डेवलपिंग वर्ल्ड टू डेवलप्ड कंट्रीज. जो क्वांटिटेटिव ईजिंग थी वो क्वांटिटेटिव टाइटनिंग में बदल गई है. दे आर टॉकिंग अबाउट द वीकनिंग ऑफ द ग्लोबल ट्रेड. They're talking about the precarious situation wherein small developing countries are. So a lot of is there in the report. In detail, I'll talk about that on Monday. प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इस रिपोर्ट का जो कंटेंट है वो इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यू नो यूपीएससी सीएससी का जो पैटर्न है वो चेंज हो गया है. दे आर नॉट गिविंग यू ऑप्शंस दीस डेज, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस. आई विल डिबेट एंड डिस्कस दैट, एनालाइज दैट इन डिटेल ऑन मंडे. That's all for today's class. I hope all of you enjoyed it. Thank you for giving me time.